Friends, I took this video when I had visited Chennai. It was a very short trip, and while traveling towards Sipcot, I came across this small lake, very beautiful, so much greenery is around it. I hope, like me, even you enjoy road trips and especially area which is full of greenery. So definitely it was a very beautiful trip, and we stayed at IBIS Sipcot, and this is what we had. It was very delicious, and from the hotel room you could see the east coast of India. I really enjoyed that little time at IBIS Sipcot. It is definitely a hotel that you must go and live in. It's really very beautiful. I think that is on the 8th floor. From 8th floor, this is the view you get. The hospitality at the hotel was very good. The staff was very kind and very sweet. Again, I'll be visiting Chennai, and I'm definitely going to book my stay there. And then, of course, I dropped in at Marina Beach, and that was a small drive on the Marina Beach, and after that from there I took off for Bengaluru. So the recipe today I'm sharing with you is definitely a Tamil Nadu special, but it is from Coimbatore. So stay tuned till the end of the video, and if there's anything that you have liked, don't forget to give a like, share and subscribe. Would like to thank all my old subscribers and the new subscribers. Thank you so much for watching. And all those who are watching and have not yet subscribed, request you all to subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुल राजपूत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर, और आपके दुआ से आई एम डूइंग सुपर फैंटास्टिक। और ये रेसिपी है कोयम्बतूर की। जी हाँ, कोयम्बतूर की रेसिपी है। और आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो बस ये सूखी लाल मिर्चियाँ हैं, इसको तोड़ना है और इसके बीज निकाल देने हैं। ओके, और कुछ मिर्चियों के मैं बीज रखूंगी, यानी 2 या 3 मिर्ची के बीज रखूंगी, बाकी सारे निकाल दूंगी। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है और इतनी कमाल की है। स्पाइसेस आर सो मिनिमम इन दिस रेसिपी, व्हाट टू टेल यू। तो ये है चिकन रेसिपी, और इसे कहते हैं चिंतामणि चिकन। जी हाँ, ये कोयम्बतूर की चिंतामणि चिकन है, और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, आप और भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइस अच्छा लगता है, सम सांबार अनियंस वी नीड। मेरे पास कम पड़ गए तो मुझे थोड़ी स्लाइस करने पड़े, तो एक छोटा अनियन मैंने आधा स्लाइस किया है, और ये ऑलमोस्ट हाफ कप है, थोड़ा और होना चाहिए था। ओके, तो ये ग्रीन चिली, lots of coriander and very minimum spices. So these are around 8 to 10 dry chilies, जिसके आपको बीज निकाल के 2 टुकड़े कर लेने हैं। This is 1 teaspoon coriander powder. This is half teaspoon garam masala, half teaspoon हल्दी। तो बेसिकली ये रेसिपी खाली हल्दी से बनती है, but I'm adding some garam masala, okay? And I've taken half teaspoon salt. If more, I'll take more. And lemon juice. We'll see how much we'll add. And one important ingredient, coconut. तो कोकोनट, मेरे पास ऐसा कोकोनट था तो मैंने इसको ऐसे कट कर लिया है, but you cut the slivers of coconut. If you got full coconut, then cut into slices. We need this at least 1/4 cup.
ओके, तो इसको मैं हल्का सा पहले फ्राई कर लूंगी। टमेटो डलता नहीं है, बट आई एम एडिंग 1 टमेटो सो दैट गोइंग टू स्लाइस इट फाइन। सो एंड वी नीड 2 teaspoon ginger garlic paste. Quantity of chicken I've taken is very less. If you got a bigger family, then you double the quantity. So friends, this is 300 grams chicken, and this 300 grams chicken has been chopped into tiny pieces, chinna pieces, along with the bone. 300 grams I have taken. Okay, and the masala that I have shown you, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं as per your family's preference. The important thing is that an idea is being shared, okay, that the chicken can be made like this also. So bring a change in your kitchen and make something different. So let's quickly get started with this recipe. I'm adding around 2 tablespoon oil. If need be, I will add more. We'll fry this coconut and we'll keep it aside. We need some curry leaves also. If you got fresh, use that. Very different recipe. Very nice. Tamil Nadu special. They are slightly pink in color. Okay, I will remove it. I've added the onions, baby onions, and I fried it for 2 minutes. I added that 2 teaspoons ginger garlic paste. I'm adding the chicken. This recipe doesn't take a lot of time to cook. तो 5 मिनट अच्छा भुनने के बाद ये देखो, ये इसकी शक्ल है। With 1 tomato. Tomato is becoming soft. Okay. Two teaspoon lemon juice. One-4 teaspoon pepper. All this we will add. Two tablespoons water. Coconut. Last 2 tablespoon water, and cover this with a lid and I'll cook for just 5 to 8 minutes. Let's check, friends. It's already 5 minutes. खुशबुएं तो ज़बरदस्त आ रही है। नमक भी परफेक्ट है। मैं थोड़ा और नींबू जूस डालती हूँ। एकदम
सिंप्लिसिटी जो बोलते हैं ना, एकदम गांव में कैसे बनाते हैं चिकन, उस तरह का है ये। बहुत ही ज़बरदस्त है। गोज वेरी वेल विथ योर रोटी, दाल, राइस, पराठा। बहुत ही कम मसालों में, बहुत ही उम्दा फ्लेवर, कुछ अलग, कुछ हटके, ओके, खतरनाक, ज़बरदस्त है ये चिंतामणि चिकन। एंड द स्मोकी फ्लेवर ऑफ दिस रेड चिली, ज़बरदस्त। आपको तीखा अच्छा लगता है तो बीच के साथ ये डाल दो, और हरी मिर्चियाँ डाल सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना तीखा नहीं खाते हैं। सो दिस इज इट, दिस रेसिपी इज डन फ्रेंड्स। इफ यू हैव लाइक्ड this recipe, then don't forget to give your like, share, subscribe. Take very good care of yourself. Be safe, be happy, keep smiling. Good food, good mood. And until we meet next, don't forget to eat, love and pray. Bye.